Hello. Let us discuss set 7 of reasoning section of CAT 2018 slot 2 paper in this video. So the question was, each of the 23 boxes in the picture represents a product manufactured by one of the following three companies, Alpha, Bravo and Charlie. The area of the box is proportional to the revenue from the corresponding product, while its center represents the product popularity and market potential score out of 20. The shadings of some boxes have got erased. The companies classified their product into 4 categories based on combination of scores out of 20 on the two parameters. The two parameters are product popularity score and market potential score. So how they have divided this graph? See, in total we have like the critical value over here is 10. 10 वो value है जहाँ से values change हो रही हैं. तो आप देखेंगे when both the scores are more than 10, then the product falls into promising category. So that means if we divide this graph into 4 quadrants, so this is the quadrant representing promising category. Fine. If the market potential is less than equal to 10, but product popularity is more than 10, so the product will fall in blockbuster category. So this will be blockbuster category. Similarly, this will be doubtful and this will be no hope category. Fine. उसके अलावा there are certain information that was given to us. Alpha and Bravo had the same number of products in the blockbuster category. Charlie had more products than Bravo, but fewer products than Alpha in the no hope category. Each company had equal number of products in the promising category. Charlie did not have any product in doubtful category, while Alpha had one product more than Bravo in this category. So इस तरह से ये there were 7-8 points of information that was given to us. Now हमें करना कैसे है? So first of all, let us try to figure it out कि कौन-कौन से product Alpha category से belong करते हैं, कौन से Bravo and कौन से product Charlie category से belong करते हैं. So try करते हैं इसको solve करने का. So first of all, let me divide this graph into 4 quadrants. Each quadrant will represent then one of the category of product. So since 10 is the critical limit, तो मैं यहाँ पे एक line यहाँ खींच देते हैं. So this is 10 and ये भी आपका. So now I divide this graph into 4 segments. So this is our promising sector. This is blockbuster. Fine. This is your no hope and this is doubtful. ये चारों आपकी quadrants हो चुके हैं. Now let us try to use this information. Alpha and Bravo had the same number of products in blockbuster category. So in blockbuster category, if we check in blockbuster category, we have a total of 7 products. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And these are divided into 3 categories A, B and C. अब हम देखेंगे कि the value of Alpha and Bravo is same. So let it be XX. Now we already have how many Charlie? We have 1 and 2 Charlie products already present over there. So 2. अब 5 products are remaining. So उनको A और B में equally divide नहीं किया जा सकता है. So from here we can say that Charlie के there must be 3 products और Alpha and Bravo के there must be 2 products each. ये इनका bifurcation होना चाहिए. Fine. Now let us move to what else information can we have from this? पहले एक बार वो check कर लेते हैं. So first of all, see यहाँ से हम इनकी values यदि हम जो इनके area हैं that represents the revenue. So the value of this block is 2. 2 कैसे? The length is 2 and width is 1. So the area of this rectangle must be 2. Fine. This area is 4. This area is 6. This area is 9. This is 6. This is I think 6 and this is 3. तो इन सबके एरिया लिख लिए हैं. ये एरिया इनकी रेवेन्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फाइन. इसका एरिया इज 3. दिस इज 2 एंड दिस इज 9. दिस एरिया इज 9. दिस इज 1. This area is 4. 2 into 2. Fine. This area is 6. This area is 4. This is 1 and this is 6. तो हमें ये भी एरिया दिख रहे हैं. आप केवल नो होप कैटेगरी रिमेनिंग है उसके भी हम एक बार एरियाज लिख लेते हैं. तो दिस एरिया इज 2. This is 1. This is 1. This is 4. I think this is also 4 and this is 3. तो ये वैल्यूज हैं जो इनकी एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फाइन. Now let us move to the second information that we have. Charlie had more products than Bravo, but fewer products than Alpha in no hope category. So in no hope category, we have a total of 1, 2, 3, 4, 5, 6 products are there. And out of the 6 products, Charlie के product is greater than that of Bravo, but less than that of Alpha. So there is only one possibility. There is only one possibility that A has 3 products, C has 2 products, and B has 1 product. इसके अलावा और कोई भी possibility नहीं हो सकती है जो इस condition को satisfy करे.
फाइन, तो इधर भी हमको नो होप कैटेगरी में भी हमने फाइंड आउट कर लिया है क्या क्या थे प्रोडक्ट. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट. Each company had an equal number of products in promising category. So in promising category, in total we have 3 products, and each company had equal number of products. So A, B और C तीनों की value we don't know the value of revenue, but the number of products is 1 only. तीनों में 1 होगा. And the last category is doubtful category. Doubtful category की information is Charlie did not have any product in doubtful category. So we have 0 product of Charlie in doubtful category, while Alpha had 1 more product than Bravo in this category. So in total we had 7 products in this category. और Alpha का एक product ज्यादा था Bravo से, so we can say that Alpha must be having 4 products and Bravo के पास there must be 3 products. तो ये बच्चों ये जो number of आपके products है उनका हमने distribution कर लिया है कि किसके पास कितने कितने products. Fine. Now let's move to information number 5. Bravo had higher revenue than Alpha from products in doubtful category. So in doubtful categories, the revenue from Bravo is more than that of Alpha. Fine. ठीक है. अच्छा इनकी revenues जो जो हमको visible है वो हम लिख सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ से हम let's start from blockbuster category itself. Blockbuster में Alpha के 2 products are already there. उनके revenues 3 and 6. So 3 and 6. Total revenue Alpha का यहाँ से हो चुका है 9. Bravo की चेक करते हैं. तो Bravo के we have 1 product. Second product कौन सा है that we don't know. और Charlie के we have 3 products. और Charlie के उनमें से out of 3 2 products का revenue is 2 and 6. Fine. तो ये value हमने fill कर लिया. Now the information is Charlie had higher revenue from than Bravo. So in this particular category, revenue of Charlie was more than that of Bravo. अच्छा अभी हमारे पास 2 प्रोडक्ट जिनका रेवेन्यू 4 और 9 है, वो अननोन है कि 4 किसका होगा 9 किसका होगा. फाइन. अब सपोज हम यहाँ पे 4 दे देते हैं और यहाँ पर 9 दे देते हैं. So उस पर्टिकुलर केस में रेवेन्यू ऑफ Bravo will be more than that of Charlie. That will contradict the condition. So from here we can say that यहाँ पर it must be 9 and यहाँ पर it must be 4. The total revenue from Bravo in this particular category is 10 and that from Charlie is 17. Okay, fine. So I hope यहाँ तक clear होगा guys. उसके बाद next information is okay, Bravo and Charlie had the same revenue from products in no hope category. In no hope category, Bravo and Charlie had the same revenue. So revenue of Bravo is equal to revenue of Charlie. So let's move to no hope category. No hope category में जो revenues हैं पहले वो एक बार चेक कर लेते हैं. Alpha का we have 4, we have 2 and बस ये तो पता है. Bravo का we have 4. Now C जो C का revenue है Charlie का that total must be 4 और जो revenue जिनकी value हमको पता नहीं है किस किस के हैं that is 1 1 and 3. Out of these 3 एक Alpha का है and 2 Charlie के हैं. Now Charlie की total value must be 4 because revenue of Bravo is equal to revenue of Charlie. तो यहाँ से we can say that Charlie के पास 1 और 3 वाला product आना चाहिए और जो remaining one है that must be with Alpha only then. यहाँ से हमको Alpha का बीटा का Alpha Charlie और Bravo का revenue पता चल गया है. Here the total revenue is 7 4 and 4. Fine. So ये भी हमने complete कर लिया है. Now let's move to further जो information दे रखी है उस पे आते हैं. Okay. So now let's move to promising category. Promising category में we have 3 products only. उनका revenue is 2 9 and 3. But then कौन सा revenue किसका होगा that we cannot find out. अभी हमको कोई information नहीं है जिससे हमको पता लगा पाए. So let's move to doubtful category. In doubtful category we have a total number of 1 2 3 4 5 6 7 products are there. Fine. उनमें से A के पास we have 4 products. C का revenue must be 0 only. C have 0 products in this category. अब जो B के product है that is 4 and 6 वो revenue हमको दिख रहा है. A के प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू केवल 4 और 1 है जो हमें पता चल रहा है. फाइन. नाउ B के पास एक और रेवेन्यू आना चाहिए एंड द कंडीशन इज दैट रेवेन्यू ऑफ B मस्ट बी दैट ग्रेटर देन दैट ऑफ A. ठीक है. नाउ द वैल्यूज रिमेनिंग इज आई थिंक दिस 9 इज रिमेनिंग, दिस 1 इज रिमेनिंग एंड दिस 4 इज रिमेनिंग. 6 इज रिमेनिंग. उसमें से B के पास क्या आएगा और A के पास क्या आएगा, देयर इज कंफ्यूजन ऑन दैट. ठीक है. तो बट दैट इज श्योर कि B के पास 1 नहीं आ सकता है. क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि यदि हम B को यहाँ पे 1 देते हैं तो हमें 9 और 6 यहाँ रखना पड़ेगा. उस केस में रेवेन्यू ऑफ A ज्यादा हो जाएगा रेवेन्यू ऑफ B से. सो वी कैन से दैट 1 तो फिर A के पास ही होगा.
Now the confusion is between 6 and 9. एक वैल्यू यहाँ पर आएगी and one value must come over here. Fine. Now let's move to the last information. The total revenue of Alpha and Charlie was same. So total revenue from Alpha was equal to total revenue from Charlie. So this is the last information that we need to use. Okay. So let us check this out कि अभी तक जो हमें पता चला है उससे अल्फा की टोटल रेवेन्यू कितनी हो चुकी है. So total revenue of Alpha is 9 from blockbuster category, 7 from this NH no hope category. We don't have any idea about the promising category. Let it be X. और अब यहाँ पे we have two cases. So in first case, let us assume कि यहाँ पर A का value was 6. So A का total value now is 9 plus 7 is 16 plus 6 is 22 plus X. And C का total value is 17. From here 4 21, 21 and 0 21. और यहाँ से हम assume करते हैं it is Z. तो C का total value is 21 plus Z. Fine. ठीक है. This was the first case. अब हमें क्या करना है, जो promising category है उसमें से एक प्रोडक्ट A को देना है और एक प्रोडक्ट Z को देना है. Such that दोनों का डिफरेंस must be equal to 1. 1 क्यों होना चाहिए डिफरेंस? देखिए जब ये 22 plus X is equal to 21 plus Z, तो यहाँ पर यदि मैं Z की कुछ ऐसी वैल्यू देता हूँ which is 1 less than X, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. So from here we can say that the value of Z must be 3 and that of X must be 2. यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि Z की वैल्यू must be 3 और X की वैल्यू must be 2. But this is one case only. हमको दूसरा केस भी चेक करना चाहिए when यहाँ पर डाउटफुल कैटेगरी में जब हम A को 9 देते हैं, तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं उसमें क्या कंडीशन बन रहा है. So 9 plus 7 16, 16 plus 9, 16 plus 9 will be 25 और एक प्रोडक्ट आएगा X कैटेगरी से. कौन सी कैटेगरी से? प्रॉमिसिंग कैटेगरी से. और ये इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. Z की टोटल वैल्यू कितनी हो रही है? C की टोटल वैल्यू 17 plus 4 is 21, 21 and 0 is 21 plus Z. अब यहाँ से we need two products जिनके में 4 का डिफरेंस होना चाहिए. इन प्रॉमिसिंग कैटेगरी we need two products जिनकी वैल्यू में 4 का डिफरेंस हो. ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिनकी वैल्यू में 4 का डिफरेंस हो. तो ये केस इज नॉट पॉसिबल. So from here we can say that A के पास कितना वैल्यू आया होगा? I think I have done a little bit of mistake over here. We need to check for the total value. है ना? I think मैंने केवल A की लास्ट वैल्यू I have considered. तो मैं इसको दोबारा एक बार आपको शो करता हूँ. लास्ट कंडीशन हमारे पास है कि टोटल रेवेन्यू ऑफ A must be equal to total revenue of C. उस पे वापस से फोकस करते हैं. Okay. So here value of A is 9. यहाँ से अपना 7 है. यहाँ से हमें नहीं पता let it be X और यहाँ से हम assume कर रहे हैं 6. तो यहाँ से टोटल हो जाएगा 6 plus 4 10 and 1 and 1 2 12. Now earlier what I did was मैंने केवल यहाँ पे 6 काउंट कर लिया था. ठीक है. Although I don't think that would be making any differences in the question. थोड़ा यहाँ पे वैल्यू में चेंजेस आ जाएंगे इसलिए मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ. ठीक है. तो ये अपनी टोटल A की वैल्यू है. Now this must be equal to total value of Z. Now total value of C, sorry. Total value of C is 17 plus 4 plus 0, that is 21. और यहाँ से अपन Z assume कर रहे हैं. So this must be equal to 21 plus Z. Now यहाँ से आप देखेंगे this is 16 plus 12 is 28 plus X. 28 plus X must be equal to 21 plus Z. तो यहाँ से हमें दो ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने हैं from this promising category जिनकी वैल्यू में 7 का डिफरेंस हो. 7 का डिफरेंस हो तो आई थिंक 2 and 9 इनमें 7 का डिफरेंस है. तो यदि हम 2 को यहाँ दे दें और 9 को यहाँ दे दें तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. फाइन. बट दिस इज द केस जब हमने A की वैल्यू 6 अज्यूम की है. नाउ इट कैन बी 9 आल्सो ना. तो एक बार दूसरा केस भी चेक करते हैं. जब A की वैल्यू इज 9 तो यहाँ से भी हम 9 and 7 16, 16 and 4 20, 21 22 and 9 is 31. So this 31 plus X from promising category and this must be equal to Z की C की क्या वैल्यूज है? 17 4 and 0 that is 21 and Z from this promising category. अब हमको दो ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है promising category में जिनमें 10 का डिफरेंस हो. बट आप देखेंगे कि promising category में ऐसी कोई भी दो वैल्यूज नहीं है जिनमें 10 का डिफरेंस हो. So from here we can say that this case is not possible. और ये केस पॉसिबल नहीं है तो हमको पता चल गया है कि A की वैल्यू must be 6 only and that of B must be 9 only. फाइन. और उस पर्टिकुलर केस में यहाँ से Z की वैल्यू must be 9 और यहाँ पर A की वैल्यू must be 2, so B must be 3.
So now हमको सारी information मिल गई है. So now let us move to the question part. तो questions उन पे आते हैं हम. Okay, so let's move to the first question. So I have tabulated the information. जो information थी उसको इस तरह से note कर लिया है. Now considering all the company's product, which product category had the highest revenue? See the total revenue from alpha category from यहाँ पे हम एक बार check कर लेते हैं. Alpha का total revenue is 7 and 12 and 9 and 2. ठीक है, ये total होता है अपना 20 and 30. Fine. That of Bravo is 4, 19, 10 and 3. 4, 19, 10 and 3. There the total is 23 and 33 and 36. And that of Charlie, it must be equal to alpha because it was given in the question. So this is 4 and 0, 4 and 17, 21 and 9 is 4, 0, 17 and 9. That will make it 30. So the product category that had the highest, so the company that had the highest revenue was B, and the product category that had the highest revenue. So from A, from no hope category, we had a total revenue of how much? This is 15. From doubtful category, we have a total revenue of 31. From this blockbuster category, we have a total revenue of 1936. And from this last promising category, we had a total revenue of 14. So blockbuster is the category जिससे हमको maximum revenue मिला था. Let's move to the second question. Okay, so second question is which of the following is the correct sequence of the number of products of Bravo in NoHo? सबसे पहले आपको NoHo के देखने हैं, then doubtful, then promising, then blockbuster. NoHo में देखेंगे अपन इसके products. तो कितने आ रहे हैं Bravo के NoHo में? In NoHo, Bravo have one product. So here it is one. Doubtful में Bravo के we have 3 products. Promising में तो सबका ही 1 product है, and in blockbuster Bravo के we have 2 products. So the correct answers should be 1, 3, 1 and 2. Option B satisfied. So 1, 3, 1 and 2. Option B is the correct answer. Let's move to the third question of this set. Okay, so the third question is which of the following statement is not correct? We need to find out the incorrect statement. Alpha's revenue from Blockbuster was same as Charlie's revenue from Promising. Alpha's revenue from Blockbuster. Now Alpha का revenue from Blockbuster was 6, in fact 9, है ना? Was same as Charlie's revenue from Promising. Charlie का revenue from Promising is 9. So ये तो same है. So this is correct statement, but we need to find the incorrect one. Bravo's revenue from Blockbuster was equal to, was greater than Alpha's revenue from Doubtful. Now Bravo का Blockbuster से कितना revenue था? Total 10. ये greater होना चाहिए Alpha's revenue from Doubtful. Alpha का revenue कितना था? 12 था. Fine, but ये तो गलत है, ठीक है ना? So this is the wrong statement. हमारा answer should be option B. This is the statement which is not correct. ठीक है? Now let's move to the last question of this set. Okay, so if the smallest box on the grid is equivalent to revenue of 1 crore, then what approximately was the total revenue of Bravo? Bravo का total revenue is, we have already found it out, it's close to 36. Fine. Now the answer that is close to 36 is 34. So the correct answer is option C, that is 34. Fine. So I hope this set must be clear to you now. Thank you so much for watching the video.